welcome back to the channel Mac Forum. Today we are going to discuss about a topic that is called as an equilibrium method. Now what is meant by an equilibrium method? And this equilibrium method is totally depends upon the Newton's second law of motion. Now what is the Newton's second law of motion? F equals to ma, force equals to mass into acceleration is the Newton's second law of motion. So this Newton's second law of motion we are going to apply in this equilibrium method. Now how to proceed for the equilibrium method, because this is one of the methods which is used to find the natural frequency of a given system. We will see about the equilibrium method and the energy method that we are using to solve the numericals. Now first, to understand the procedure of the equilibrium method, let us take an example. This is a spring having a stiffness K. Now this is only the spring. Now if we take this mass and will attach here, what will happen? This spring will get deflect. Suppose this mass is taken and this mass is attached here. Here attach the mass. Now what will happen? This spring will get some amount of deflection. Means in this spring, initially if this spring was like this, after attaching a mass, it will it will stretch and become extend. So there is a increase in the length of the spring, that is called as a deflection, and we are terming this deflection as a delta, called as a static deflection. Now this is the static deflection. Now we can say that your system, spring and mass, is in static equilibrium condition after attaching a mass. Now we will go with the free body diagram. Now this is the mass. Initially which force will act in this system? Its self weight. Its self weight will act mg in the downward direction, and when the spring will get stretched, it will try to pull this mass backward in the upward direction. Means spring will apply a force in the opposite direction, which tries to bring the body towards the mean position. So what is the spring force? The formula of spring force is given by the formula F equals to K into X. Force is nothing but stiffness into deflection. So stiffness is K. What is the initial deflection? Delta. So mg equals to K delta. So under static condition, what we are getting? Mg equals to K delta, because the weight is balanced by the spring deflection. Fine. This is a static condition. Now when we apply a force in this mass in the downward direction, this mass will move downward and will have an additional deflection if we physically pull the mass in the downward direction. So when mass is in this position, initially equilibrium position, it will come to this position after applying a force. Now this much is the distance that is traveled by the mass after the application of the force. So it is have, let the distance be x. Now what will be the total deflection? Initially under static condition it is delta, now it is x. So total deflection will be what? X plus delta. We will be having a x plus delta is a total deflection. Now if we apply or try to make the free body diagram, so for this condition, this is static condition, this is not the static condition, this is a condition after the application of the force. So this is the initially weight mg. Fine. Spring force will be in the upward direction because it will try to pull back the mass. Spring force is nothing but the K of delta plus x. Now one condition you have to remember: when we apply a force or a displacement in the downward direction, there is a generation of the acceleration opposite to the direction of the displacement. Acceleration force or the inertia force, which is called as mass into acceleration. That is Newton's second law. M into A hota hai, so it will be m x double dot. Fine. This is a self weight, this is the spring force, and this is the inertia force when we displace the body in the downward direction. So opposite to direction of the displacement, inertia force act. This inertia force is also called as a pseudo force. Fine. Mx double dot is mass into acceleration, Newton's second law. So it will act in the upward direction.
Now we can see that one force in the downward direction, two force in the upward direction. Now remember the sign convention. The force which is moving towards the mean position, that is taken as positive, and the force that is going away from the mean position, that is taken as a negative. ये याद रखिए, जो भी फोर्स आपके मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट हो रहा है that is positive, और जो नहीं हो रहा है opposite हो रहा है that will be negative. Now we have a principle called as a D'Alembert principle. आपको जब आप वाइब्रेशन पढ़ोगे तो आपको आएगा D'Alembert principle, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, which states that inertia force plus submission of the external force is zero. क्या? Inertia force plus submission of the external force is zero. Now inertia force in this case is nothing but this one, mx double dot. So हमने यहाँ पे लिख दिया mx double dot plus the submission of the external force. यहाँ पे external force कौन से हैं? mg self weight and the spring force k delta plus x. Now spring force कहाँ जा रहा है? ऊपर. मीन स्प्रिंग फोर्स इस बॉडी को कहाँ लेके जाएगा? टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. ये आपकी मीन पोजीशन थी, ये स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा, सो दिस विल बी पॉजिटिव. क्लियर? एंड द अदर एक्सटर्नल फोर्स इज सेल्फ वेट व्हिच इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन इसकी क्या है? ऊपर. ये कहाँ जा रहा है? नीचे. सो माइनस mg. क्लियर? नाउ mg इज इक्वल टू k डेल्टा. दिस k डेल्टा एंड दिस mg विल गेट कैंसिल आउट. आपको क्या मिलेगा? mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, x डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है. दिस इज अ फंडामेंटल इक्वेशन. क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा फंडामेंटल इक्वेशन. नाउ व्हाट, ये हो गया आपका इक्वेशन. क्लियर? mx डबल डॉट. नाउ ये इक्वेशन हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए. क्या निकालने के? फ्रीक्वेंसी निकालने के. देखिए जैसे कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है या आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी x इक्वल्स टू x साइन ओमेगा टी. हार्मोनिक फोर्स HSM फोर्स, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी x ओमेगा कॉस ओमेगा टी. फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन, x डबल डॉट एक्सेलरेशन माइनस x ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. नाउ x साइन ओमेगा टी क्या था आपका? स्मॉल x, तो यहाँ पे हो जाएगा x ओमेगा स्क्वायर. ये टर्म को आप ये साइड लेके आ जाइए, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0. आपको ये इक्वेशन मिल गया. दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो. हम क्या स्टडी करते थे? हमने एक स्टडी किया था, एक स्प्रिंग और एक मास. ये स्टडी किया फिलहाल तो अभी तक. उसका भी सारा हम क्या कर रहे हैं? एनालिटिकल मेथड देख रहे हैं. तो इसको अगर आप कंपेरिजन करते हो तो कंपेरिजन क्या मालूम पड़ेगा आपका? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? k बाई एम. क्लियर? दोनों को कंपैरिजन करने के बाद मीन्स हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ k बाई एम. इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड. ये हो गया आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये इक्वेशन हो गया आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आपको ये मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं. ओमेगा इन अंडर रूट ऑफ k बाई एम रेडियन पर सेकंड. नाउ ओमेगा निकल गया. आपको क्या निकालना है? Fn फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स. सो आपका Fn कैसे निकलेगा? Fn इज नथिंग बट ओमेगा n अपॉन 2 पाई. सो Fn विल बी व्हाट? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m इन हर्ट्स और साइकिल्स पर सेकेंड. सो दिस इज द प्रोसीजर or the method of solving the numericals by equilibrium method. First of all, you have to draw the free body diagram, identify the inertia force and the external force, apply the D'Alembert's principle, and then compare with this equation. After comparing, you will get a natural frequency equation. Put the value of stiffness if given in the question, put the value of mass if given in the question, get the value of natural frequency. So hope you will understand the concept of equilibrium method by this video. If you like this video, do like the channel, subscribe the channel and share with your friends. Till then, take care.